इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो टीम इंडिया खेल रही है इंग्लैंड के साथ। पहले टेस्ट मैच में रिजल्ट जो है वो हमारे हित में नहीं गया एंड वी लॉस्ट दैट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन हैदराबाद। लेकिन वही आंध्र प्रदेश में एक और शहर, एक और क्रिकेटिंग सेंटर इसमें खेला जाएगा। ये दूसरा टेस्ट मैच जो है विशाखापट्टनम में। फ्रॉम तेलंगाना नाउ टू आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम के लिए हमारी टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। यू सी अ लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस उस पहले टेस्ट मैच में, लेकिन कुछ नाम जो हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे एंड वील कम टू दैट। वी सॉ श्रेयस अय्यर, वी सॉ रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, रोहित शर्मा दिखे, यशस्वी जायसवाल दिखे एंड सामने अब बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज इंग्लैंड हैव गॉन 1 अप इन दिस 5 मैच सीरीज। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई है टीम इंडिया के कैंप से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो हैं वो इस दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा दोनों टांग की चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं। बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया है एंड सरफराज खान इज इन द टीम, वॉशिंगटन सुंदर इज इन द टीम एंड सौरभ कुमार जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, उनको भी इंडिया सीनियर टीम में जगह मिली है। तो 5 बज चुके हैं। स्वागत है आपका फॉलो द ब्लूज लाइव पे and my name is Suren Sundaram. There you have it on the screen, but joining me now is first up our Follow the Blues insider Rohan Deshmukh and also the India editor of Crick Info. We've got George Binoy. Man, old friends back together. Lekin not great news guys, because ये कल रात को ही पता लग गया था that केएल राहुल and रविंद्र जडेजा both of them are out of the second test. रविंद्र जडेजा वाला थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि yes that is a possibility. केएल राहुल, I mean I don't know where that happened, when it happened. Guys, big blow for Team India. Rohan, starting with you. एब्सोल्युटली एज यू सेड कि बिल्कुल पता नहीं था कि केएल राहुल की इंजरी कब हुई, कैसे हुई, बट more than the fact that how it happened, both of them not going to be there in Vizag is a big blow, क्योंकि दोनों ने जो है अच्छे रन बनाए थे एंड जडेजा obviously being one of your top run getters in India for some time now. So this is a big blow for India and obviously replacements तो आ गए हैं। सौरभ कुमार as a replacement for जडेजा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम आया है और सरफराज obviously getting a well deserved call up to the Indian team. So interesting to see that which combination the Indian team will go with, considering that सौरभ कुमार a very able left arm spinner है, अच्छा रिकॉर्ड डोमेस्टिक में रहा है और काफ़ी वक्त तक जो है वो इंडियन टीम के साथ एज अ नेट बॉलर भी ट्रैवल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ही इज़ ऑल्सो फेमिलियर विथ हाउ द वर्किंग्स ऑफ द इंडियन टीम मैनेजमेंट और क्या कुछ चीज़ें जो भारतीय टीम मैनेजमेंट को चाहिए उनको अच्छी तरह से पता है। वॉशिंगटन सुंदर विल बी एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज ही इज़ समवन हु कैन बैट एंड ही can provide off spin to you. New age off spinner, has a lot of experience in terms of how the batsman play the sweep or the reverse sweep, because he plays a lot of T20 cricket. So that's a very interesting call. He's someone who is used to bowling to batsmen with that kind of an aggressive approach, and obviously Sarfaraz Khan will, I'm sure George and Suren will be talking a lot more about him, about how well deserved a call up for him it is in the Indian team. Yeah, well, I'll be honest, I am excited to see Sarfaraz Khan because it almost feels कि he has been part of the team, लेकिन finally अब physically वो इस टीम का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि हम कितनी देर से बात कर रहे हैं, कितने टाइम से बात कर रहे हैं that सरफराज खान को क्या टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन बाय द वे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं जॉर्ज और रोहन 10 मिनट से बात कर रहे थे ऑफ कैमरा एंड हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी हमने इंटरनेट छान मारा एंड इट इज़ द सेम राइट लेग माइंड यू जिसमें केएल राहुल को इंजरी हुई थी आईपीएल में एंड इट्स द सेम लेग दैट ही हैज़ कंप्लेन्ड ऑफ पेन विच इज़ व्हाई इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सेकेंड टेस्ट मैच, राइट। लेकिन नाउ व्हाट दैट मीन्स, देयर इज नो विराट कोहली, नो केएल राहुल, नो रविंद्र जडेजा। केएल एंड जडेजा ने रन बनाए थे उस टेस्ट मैच पे जिसके वजह से हम वो 450 का आंकड़ा जो पार कर पाए थे। सो जॉर्ज, आई एम गोइंग टू शो यू सम नंबर्स एंड सम वरिंग साइंस बिकॉज who are the big peeps then? आप किसको बैटिंग ऑर्डर में जगह दे रहे हैं? Because considering Indian batters numbers against spin, you'll take a look at that and just see the number of players who average over 40. There is Ravindra Jadeja, Rishabh Pant,
and Akshar Patel. सिर्फ Akshar Patel उस लिस्ट का हिस्सा हैं who averages over 40 who will play the second test match. So that batting order right now is seeming a little problematic. Yeah, so it has been very difficult to play spin in India in recent years. So, you should take these averages with a pinch of salt. Like you have Right. Rishabh Pant and Akshar Patel who come lower down the order, when the ball is older, softer. That's why, they're probably leading those averages on that list. But yes, the challenge for India is pretty big. Rohit Sharma at the top of the order, when he looks down that batting order after him, he's going to see a number of inexperienced players. Jaiswal, Gill, Shreyas hasn't played too many tests. And then you have either Rajat Patidar or Sarfaraz Khan or both who haven't played international cricket yet. But this is a big opportunity for them, They should be approaching it with eagerness, with enthusiasm. It's really hard to break into India's test batting order. And finally, when they've got their chance, and these are not inexperienced people at the first class level. Patidar and Sarfaraz Khan have been around for years. They've Yep. scored lots of runs in domestic cricket. They've scored lots of runs on pitches that turn. So, it's not doom and gloom. We shouldn't be too pessimistic or too reactive after this defeat. Yes, India's batters were found wanting in Hyderabad, but there's no reason that they can't apply themselves better in Vizag, where they have won 2 tests with big margins against South Africa Yeah. in 2019 and against England in 2016, 2017. So yeah, there's no reason, to worry too much at this stage. Rohan, आपको कुछ ऐड करना है if I'm not wrong. Yeah, I was actually just Suren, I was just going through that graphic list ना मैं at the top of the list I was just trying to figure out कि हमारे middle order के batsmen कहाँ पर है. विराट कोहली दिखे नंबर 4 पे, रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, then comes Cheteshwar Pujara, and then comes Shubman Gill. So I know, as George said, that we have to give few of our youngsters a little bit of time. But the fact is that when you expect कि बैटिंग ऑर्डर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं ना वो स्कोर करे या फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन स्कोर करे, सो this is a bit of a worrying sign for me. The fact that your lower order has been able to bail you out a lot many times is actually reflecting here among the kind of runs that have been scored against spin. So that is a problem for me. That's a problem, George, for me. I'm not saying in terms of like how difficult the wickets have been, or we know how difficult the wickets have been. Just the fact that there's not many runs from the middle order or the top order except for Virat and Rohit to show in that particular list where we can say ki, okay, we are absolutely solid against spin, and we know that we have been struggling against spin, so it's a known fact. But that's only a worrying sign. We expect Shreyas Iyer to actually, he's known for it, and we all know that he's known to be someone who is really aggressive and scores runs against spin. We really hope that he does well in Vizag, and obviously with Gill under pressure, I'm sure he'll be like waiting to get some runs. ये जो 2 प्लेयर्स के आपने नाम लिए, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल. श्रेयस हमने देखा उनका 35 का एवरेज है और शुभमन का कुछ 32 के आसपास, लेकिन पिछली 10 पारियों में इन दोनों ने क्या किया है, वाओ. सो दैट्स नॉट अ प्रीटी साइट, क्योंकि 11 पारियों में शुभमन गिल ने 173 रन बनाए हैं एंड 17.3 का औसत है, एंड 10 पारियों में श्रेयस अय्यर ने 131 बनाए हैं, 14.5 का औसत है. ऑल्सो लाइक जॉर्ज सेड, थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस नंबर को देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी जो मैचेस हैं या काफ़ी सारी जो पारियां हैं, दे प्रॉब्ली कम इन एलियन कंडीशंस एज वेल. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो सीरीज थी, उसके अलावा लास्ट ईयर पूरा फोकस जो है वो शायद ODIs पे था, कंसिडरिंग दैट द वर्ल्ड कप. बट जॉर्ज, आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. Shubman and Shreyas, they've been found wanting because they did get starts and they weren't able to convert those starts into bigger scores, and they would be feeling the heat. Well, Shubman more than Shreyas, I think, at this point. What was disappointing for me in that last innings in Hyderabad was, the manner of their dismissals. These are both stroke makers. They're, fairly attacking players. And in that first innings in Hyderabad,
when they got starts, then they threw it away playing a slightly loose shot. But in the second innings, instead of playing a game that maybe comes naturally to them, both of them were out to defensive strokes, not really trying to throw England off their game. In those conditions, when the pitch was spinning that much, that is when you perhaps needed to be a little braver and take that risk instead of, just trusting your defense, because eventually one ball was going to come that had your name on it and you were going to get out. So I would hope that the Indian team gives them confidence and tells them to go and bat with that clarity of thought and, without worrying about places in the team and whatnot. England do that quite well. They tell their batters, if you get out playing a reverse sweep or an attacking shot, you're not going to be criticized in the dressing room for it. So they have a lot of clarity of thought when they go out to bat. And that's what I think these two people also need. Right, so Shubman Gill, Shreyas Iyer, I mean, we are hoping that we get to see some big runs from them in the second test match. Again, are you excited for Sarfaraz Khan finally being drafted into the Indian squad? I mean, finally are you happy is what I'm asking, because मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले एक साल से हम बात कर रहे हैं कि सरफराज खान को जगह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए. There's been so much hue and cry over this. Rohan, do you want to take this one, man? Very simple thing that Sarfaraz has been knocking on the doors for some time now. Everyone has been saying. सब former cricketers, experts यही कह रहे थे कि सरफराज को टीम में होना चाहिए. अब मौका मिला है. Now it's very interesting to see that he and Rajat Patidar both are in the squad, and it will all come down to the team combination, whether both will play or only one will play. And even if one has to play, it's a very tricky call, because both have scored hundreds and big hundreds against the England Lions very recently. Probably the only reason only thing which I feel that could go in favor of Sarfaraz is the way he is actually playing against the spinners and his gameplay against the spinners. Could this possibly be the answer, to what we were looking at in terms of the sweeps and the reverse sweeps or the scoops or the paddle sweeps that Sarfaraz can play? So that is something which may go in his favor, but obviously Rajat Patidar has been there for some time now. He is also been playing a lot of domestic cricket and scoring runs, but this call would be basically on the kind of combination, the bowling combination the Indian team actually goes into the Vizag test. Well, before we get George to talk about Sarfaraz Khan, and I'm sure that George, you have a lot to add, लेकिन हमारे साथ सरफराज खान की एक बहुत खास बातचीत हुई जो हम आपके लिए लेके आए हैं फॉलो द ब्लूज लाइव पर. नहीं, जब मैं छोटा था तब देखता था डैडी क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने अपना सपना नहीं पूरा कर पाया, तो वो सोच रहे थे कि उनका सपना मैं पूरा करूं. तो वो बोलते थे कि मुझे इंडिया खेलना था, मैं नहीं खेल पाया, तो मैं चाहता हूं कि तू खेले. तब से मैं बहुत सीरियस हो गया क्रिकेट को लेके, और वही मुझे मोटिवेट करता है. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं इस गेम के जोन में रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ. तो मुझे ना गेम के जोन में रहना मुझे बहुत पसंद है, और बैटिंग करना बहुत पसंद है, रन्स बनाने बहुत पसंद है. मेरी मतलब भूख ही नहीं मिटती रन बनाने के लिए. मतलब मैं जितना भी बनाऊँ मुझे लगता है कि कम बनाया हूँ और बना सकता हूँ. मैं बहुत सारे लोगों को अपना मतलब जिनकी मुझे बैटिंग पसंद है उनको आइडियल मानता हूँ. लाइक मुझे सचिन सर बहुत पसंद है, विराट भाई, रोहित शर्मा, इवन जावेद मियांदाद, ये सब लोग मुझे काफ़ी पसंद है. जब मैं इंडोर में जाता था और देखता था सचिन सर आ रहे हैं वहाँ पर बैटिंग करने के लिए, जब हम अंडर 14 में थे, तो तभी से मैं सोचता था कि मैं भी कब सचिन सर से मिलूँगा और कब मैं भी नाम कमाऊँगा. जब डेब्यू किया था तब मैं विराट भाई के साथ खेला था, और क्रिस गेल और AB डिविलियर, उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि कैसा खेलते हैं, कैसे वो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है इस IPL क्रिकेट में. तो वो सब चीज़ से काफ़ी सीखा हूँ मैं. पहले जब मैं तो विकेट फेंक देता था, मतलब विकेट को थ्रो कर देता था 30-40 रन के बाद, और पहले भी रन करता था, बट 30-40 पे आउट हो जाता. बट जब से मैंने सोचा हो कि नहीं, मुझे बड़ा स्कोर करना है, और फिर बड़ा स्कोर करने के बाद मुझे और कैसे बड़ा करना है, तो अभी मतलब वो जोन में हूँ मैं प्रॉपर, कि मुझे पता है कि कौन से टाइम पर क्या करना है. और तो मैं एडवाइस ज़्यादा मेरे डैडी ही देते हैं मुझे. वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि ना डर के खेलना है, ना मर के खेलना है, सिर्फ लड़ के खेलना है. देखिए, भारतीय क्रिकेट फैंस जो हैं वो सरफराज खान की बैटिंग थोड़ी बहुत देख चुके हैं इन दी IPL, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही इज गॉट बॉन्कर नंबर्स. 69.65, 3,912 रन बनाए सिर्फ 45 मैचों में, एंड दैट्स समथिंग दैट ऑलवेज इंटरेस्ट मी. वो जो कन्वर्जन रेट है, 11 अर्धशतक हैं
और 14 शतक हैं। एंड इन 14 शतकों में एक शतक जो है वो लगभग 6 दिन पहले आया था अगेंस्ट द इंग्लैंड लायंस। 161 की वो विशाल पारी खेली थी। एंड इसी सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। ही मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी बाय जस्ट 4 रन्स, गॉट अ 50। एंड अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका ए वाले टूर पे तो वहां पॉचेस्ट्रूम में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था। You know, Rohan said, George, that Sarfaraz Khan has been knocking on the door. I think he's been banging on the door for quite some time. But the big question is, can he make that jump? Can he adapt to the format that we know is the toughest format in the world? See, so when Sarfaraz has been in, the most focus in the public eye is during the IPL, where he's, unfortunately not yet scored a lot of runs in the IPL. But in first class cricket, in India A cricket, he scored a ton of runs away from the public attention. He's absolutely earned his place in this squad. Now, every time an India squad has been selected in recent times, there's been social media reaction as to where is Sarfaraz, what more does he need to do to get selected. Even, very eminent former India cricketers have, raised their opinion in support of him. So he's finally got that opportunity. Whether he gets into the 11 is, yet to be seen. As Rohan said, depends on India's bowling combination. But yes, if he looks at it, he's playing if he gets a chance to play in Vizag, it's a home debut against a bowling attack that is quite inexperienced. He's, scored lots of runs against this type of bowling in the past. And in these sort of conditions, so he should go into this with a lot of confidence, and if he gets that chance, like there's going to be no one hungrier to make a statement than him, because he's really earned this call up. I mean, I'm just thinking कि आज कितनी मिठाइयाँ बटेंगी और वो भी खान हाउसहोल्ड से कितनी मिठाइयाँ बटेंगी, क्योंकि जो बड़ा भाई है सरफराज, उनको जगह मिली है इंडियन टीम में, द इंडियन नेशनल टीम, जहाँ पे वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच शायद खेल सकते हैं। एंड उनके छोटे भाई जो हैं उन्होंने तो तबाही मचाई हुई है एज फार एज द अंडर 19 वर्ल्ड कप इज कंसर्न। इज गॉट अ लॉट ऑफ रन्स। एंड अगर सरफराज से हमारी बात हुई तो मुशीर को कैसे छोड़ सकते हैं? वी मैनेज टू कैच अप विद मुशीर एज वेल। जब मैं क्रिकेट तो मैंने बहुत छोटा है तब से मैंने चालू कर दिया था खेलना। जब मैं मेरे भाई को देखा, जब इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए खेले उन्होंने 2 साल, तब से मेरा वो हो गया था कि मुझे भी खेलना है इंडिया के लिए। ऑलराउंडर मुझे अब्बू ने बचपन से ही बनाया था सर, तो तभी से ही बनाया हुआ है मुझे ऑलराउंडर, बॉलिंग, बैटिंग। पहली बात तो रणजी ट्रॉफ़ी मैंने डेब्यू किया इधर मुंबई में, तो पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा था रणजी ट्रॉफ़ी में जब खेला। तो पहले थोड़ा नर्वस था, लेकिन जैसे ही मेरा डेब्यू हुआ, जब सौराष्ट्र के सामने पहला मैच खेला, तो बहुत अच्छा फील हुआ। और एक्सपीरियंस ये मिला है कि मैंने बहुत सारे प्लेयर थे उस टाइम पे हमारी टीम में, जैसे पृथ्वी भाई थे, सूर्या भाई थे, अज्जू सर थे, तो बहुत सारे प्लेयर थे, भाई मेरे भाई खुद भी थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उधर पे। तो मुझे देखने मिला कि कैसे ये ये रणजी ट्रॉफ़ी मैच में कैसे उनका एटीट्यूड रहता है, क्या रहता है, तो ये सब देख के मुझे सीखने को मिला। अब्बू ने ज़्यादा स्ट्रगल किया है हम लोग के दोनों के ऊपर लेके। तो ये है कि अब्बू का सपना है अभी हम दोनों इंडिया खेलना है, तो इंशाल्लाह पूरा करना है। भाई ने कहा है कि एक जब ये कहते हैं कि ज़्यादा इतना सोचना नहीं है, बस मैच बाय मैच खेलना है। और जो भी बात है ये कि जो भी प्रेशर सिचुएशन में तुझे बैटिंग बॉलिंग जो भी आएगी, उस सिचुएशन से तेरे को टीम को बाहर निकालना है अच्छे तरीके से और जिताना है। एक और भाई की जोड़ी जो शायद अब इंडियन टीम के लिए खेले, एक अंडर 19 खेल रहे हैं, एक शायद अपना लॉन्ग अवेटेड इम्पेंडिंग डेब्यू जो है वो कर सकते हैं कम द 2nd of February। Sarfaraz, will he make it the 11? Right, gentlemen, it's almost time to end the show. लेकिन शो खत्म करते करते we've got a very special teaser of that interview which is going viral across social media. Everybody is talking about that video, and that is Rishabh Pant, where he talks about this journey that he has taken right from the jaws of death, as he mentioned, to his road to recovery. Just thinking, 1 साल हो गया है, now we can actually look at it, right? कि 1 साल में इंडियन क्रिकेट टीम ने जितना क्रिकेट खेला है, how badly are we missing the services of someone like Rishabh Pant? Rohan? Oh, big time.
And let's just hope that he comes back soon. The fact that all eyes will be on the IPL when he eventually makes his comeback, that we are all hoping for. He started batting in the nets, which is a great sign. The only question is whether how long it will take for him to keep. But the fact that he's making that road to recovery and he's made it so quick is a remarkable one. George, missing Rishabh a lot? Yeah, the test team certainly. And as Rohan said, the road to recovery has been long. And see, like, if he comes back in the IPL, I think people will have to have realistic expectations of him. Yes. Like, he's been out of cricket for a really long time. He's going to be easing himself back into a really competitive environment. To trust his body again, to get those skills going again. It might take a bit of time. All we can do is hope that he comes back eventually to the level that he was before that accident happened. Absolutely right. तो हमारे जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, जब ऋषभ पंत वापस आएंगे एंड he'll be back on the field, be nice. जैसे जॉर्ज ने कहा, realistic expectations. He's coming back after a massive injury and it's been a while that we haven't seen ऋषभ पंत on the field. लेकिन वो इंटरव्यू जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, you will catch it here on the Star Sports Network on the first. But हर शाम 5 बजे Follow the Blues लाइव लेकर हम हाजिर होंगे. Until then, रोहन देशमुख का बहुत बहुत शुक्रिया, जॉर्ज बिनॉय का बहुत बहुत शुक्रिया. We'll see you tomorrow at 5. पीछे एक बड़ी खबर आ रही है क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का फर्स्ट टाइम ऐसा था लाइफ में हो गया अब टाइम इस वर्ल्ड में कितना बड़ा हो सकता था ये चीज़ आपको भी नहीं पता इतना एक्सीडेंट होने के बाद आई वॉज अलाइव समथिंग हैज सेव्ड मी डॉक्टर ने बोला यार 16 to 18 मंथ्स लगेंगे ये सेकेंड लाइफ हर किसी को तो मिलती नहीं है